I had to see my spirit animal, the one-horned rhino. I met this amazing lady. You want to say hello? ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದು. ये बहुत रॉन्ग कर रहे हैं. ओए ओए. Bomdila se Kohra, which is in Kaziranga, is around 5 to 6 hours away. Almost the entirety of the roads around Kaziranga are animal corridors, which means one must have to be extremely mindful of their environment. यहाँ कभी भी कहीं से भी जंगली जानवर आ सकते हैं और मेरे सामने आ गए तो कहानी खत्म. मेरी नहीं, उनकी. खत्म. Bye bye. Tata. I'm kidding, of course. The truth is I love animals, and one of the reasons I love going on safaris is to bask in their glory, feel one with nature. And frankly, I believe in treating our furry friends with respect and deeply appreciate those who help them in need. If you are one of those, मेरे नज़र में you are the real heroes this world needs. On the way, इतने सारे हाथी दिखे कि मुझे लगा कि I'm still tripping on those mushrooms, but I wasn't. यहाँ हाथी सफारी में यूज होते हैं, so it's a pretty common sight. Anyway, my focus was clear. I had to see my spirit animal, the one-horned rhino. Some other common sights and a hallmark of my great Northeast India road trip are tea estates. इस ट्रिप में लोग से ज़्यादा tea estates दिखे मुझे. Ballapura, that's what it's called. Ballapura, something like that. I missed the name, but yeah, amazing. पहुंच गया भाई काजीरंगा. Not so fun fact. Kaziranga has no hostels, तो यहाँ होटल में बुकिंग करनी पड़ी. By the way, I'm staying here just for one night. मेरी सफारी की गाड़ी आ रही है मुझे पिकअप करने के लिए, and I should be back by 6 p.m. उसके बाद I'll be meeting a fellow hog at the police guest house, and then कल सुबह check out. Short and sweet, just like my love life. And just like my relationship status, I was going on the safari solo. ऐसा मुझे लगा, but just before my jeep showed up, I met this cute mother and son duo who decided to tag along with me. You want to say hello? नंदू जी, गाइड भी आप ही हो क्या? हाँ. अच्छा, वेरी गुड. तो ये सफारी कितना लंबा होने वाला है? 28-30 किलोमीटर का सफारी होता है. अच्छा, ओके. लगभग 2 घंटा लगता है. ओके. खड़ा रह सकता ना, चलेगा ना? The eagle nest. So that's the nest, and हाँ उसके बाजू में eagle बैठा है. Yes. Eagle है वो, अच्छा. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. इस 2 घंटे के ट्रिप में I was pretty sure like other safaris यहाँ भी वही सेम चिड़िया और डियर से काम चलाना पड़ेगा. बट पार्क में एंट्री करने के 15 मिनट बाद we saw a herd of rhinos. So many. You stand on the seat. ಅಲ್ಲಿ. I could see my spirit animal but far away. I was happy but I wanted a much closer look. वैसे काजीरंगा का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में कई सारे स्टोरीज हैं, but my favorite is the one where a boy named Kazi and a girl named Ronga fell in love, and distraught that their families refused to accept their relationship, they disappeared into the forest, never to be seen again. हाँ, स्टोरी थोड़ा सैड है. ये साली समाज बिना मतलब का टांग अड़ाने आ जाती है. But look at the bright side. Living in the forest with your partner, इसको कहते हैं. Now the best part about Kaziranga is that ये पूरा रिजर्व फ्लैट लैंड्स है, मीनिंग यहाँ दूसरे रिजर्व्स की तरह घना जंगल नहीं है. In fact, quite the opposite. The park is open and consists of tall elephant grass, so it's incredibly easy to spot animals. Animals like elephants, tigers, wild buffaloes, and around 2,600 rhinos. That is so. In the same frame. Yeah. Some of them right there chilling by the lake, sharing food and water, living in peace and harmony. A lesson we humans definitely need to learn from. Rhino there. Oh, in the corner. Last. अच्छा, बाहर. He's anti-social. Sharp enough. It's sharp. What do you say? Say it again. How sharp it has to be. I said in Kannada, not Kannada. Said. Don't put it on the अरे it's okay यार. बोलो. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು सफारी को स्टार्ट हुए कुछ 20-25 मिनट हुए थे, and we saw another herd of rhinos by the river. These were closer than the earlier, but still not close enough.
very very big. Big rhino. 1, 2, 3, 4. थोड़ी देर में भी अराइव्ड एट द पिट स्टॉप। आप कितने टाइम से कर रहे हो ये ड्यूटी हाँ। हमारा लगभग 12 साल हो गया। तो आपने सब देखा रहेगा यहाँ पर? हाँ, टाइगर भी देखा है। जो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में एनिमल्स है, भगवान के कृपा से एक बार सब देखा है। वो दिखाने के लिए कोशिश भी करता ऐसा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो सब कुछ देखा रहेगा ना। हाँ, वो तो है। एक सफाई में खूब कम मिलता है सब कुछ। कभी आप लक फेवर करने से सब कुछ मिल जाता है, कभी तो एक भी आपका बर्ड्स भी या डियर भी नहीं मिलता है। ये ओपन जंगल है ना। हाँ, इसलिए। How you feeling? Oh, good. Not good on camera. I know, I can say. I'm trying to make it very subtle, but you catch it. यहाँ बात करते करते और एक राइनो ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। At this point, I couldn't believe we were literally standing just a few meters away from it, without any barricade or any cage, out in the open. If only she came up to me and said, "How you doing?" Wese, if you're wondering why I call the rhino my spirit animal, it's because like the rhino's horn, I too am horned. I'm joking. It's because in spite of being tough as hell, with the armor-like exterior, deep within, it's a gentle, kind being. Unless it's triggered, of course. Then it'll rip you apart. I believe what an experience, yeah. What a place. My friend CD Singh was right. This is literally one of the best places I've seen. I'm so glad I didn't miss it. Extremely happy with this experience. हम पार्क से निकल ही रहे थे कि और एक राइनो दिख गया. And this time he was close, just like I wished, but also in our way. We were in his territory, so we had to wait. There is a rhino blocking our way. हम rhino का ट्रैफिक जैम में फंसे हैं अभी. Wait करते करते some of the tourists started getting impatient. Waiting for that truck to go first. राइनो ने चार्ज करना शुरू ही किया बट रुक गया. That jeep got really lucky. That was crazy. I got that on camera. We slowly moved ahead, our hearts in our mouths. He's not letting us pass. नहीं, ये बहुत रॉन्ग कर रहे हैं. अगर वो चार्ज किया तो बस डेंजर है, तो हम यहीं रुकेंगे. ओके, हम वेट करेंगे. हाँ, उनको टर्न करने दो, टर्न करने दो उनको. उसको टर्न करने दो. Finally, the rhino got into the bushes and let us pass. Breathing a sigh of relief, we drove into the most beautiful sunset, just like in the movies. Until we meet again, my spirit animal. Oh, crazy. How crazy was the safari, man. Maza aa gaya. That was so close. That experience was so crazy. आपने देखा राइनो ने कैसा चार्ज किया. ओह मैन, सबकी हवा टाइट हो गई थी वहाँ उस वक्त पे. बट एनीवे, we got out of there safe and sound. This was fantastic. One of the best safaris I've done in my life. The thing is that it's not like the usual safari जहाँ पे हम अंदर घुसते हैं, फिर 1 घंटा घूमते रहते हैं, फिर एक कोई सांबार दिख गया या कोई डियर दिख गया. इसमें the moment I entered, I saw elephants, rhinos, everything, literally tortoises. I saw everything, man. I saw अलग-अलग variety के birds. Everything. It was just absolutely amazing. And I almost did not come to Kaziranga, and I'm so glad I did. Like it was completely worth it. मुझे actually solo गाड़ी में नहीं जाना था. मैं जैसे मैंने यहाँ पहुँचा मैं गाड़ी में, I saw a lady standing there with her son. और मैंने randomly उसको पूछा कि आप जा रहे हो सफारी के लिए, and we made the plan that happened. So
lovely last minute thing, and kudos and thanks to that lady for joining me. काजीरंगा मैंने फिनिश कर दिया है, एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट दैट आई वांट टू सी, दैट वाज इंटरेस्टेड इन सीइंग एक्चुअली, एंड वो सब ख़त्म करके अभी मैं जा रहा हूँ वापस गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी में शायद मैं ब्रेक पैड्स मेरे बदलने वाला हूँ, एंड वहाँ से अगर ब्रेक पैड्स नहीं बदले तो मैं सिलगुड़ी या आई थिंक कोलकाता में कर लूँगा, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई थिंक आज मैं गुवाहाटी में रुकता हूँ, एंड गुवाहाटी के बाद आई टेक अ कॉल कहाँ जाना है, सिलगुड़ी जाना है, कोलकाता जाना है, क्या करना है। Okay, so that's my journey, guys. If you've been watching so far, thank you so much for all your support. It's been absolutely amazing. 40 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पोस्ट योर कमेंट्स गाइज, आपका कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इट्स रियली मोटिवेटिंग। ब्रेक पैड्स मैंने देखो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, अभी भी चल रहा है। आई हैव नॉट यूज द फ्रंट एट ऑल। आई सर्वाइव्ड अरुणाचल, आई एम सो हैप्पी, बट इट्स बेटर इफ आई चेंज देम। अभी भी चल सकता है, 500 किलोमीटर तो आराम से चल सकता है। आई हैव टू हेड बैक, but yeah, it's better if I change them here or in Kolkata, I think, but one of the places I will have to. The bike is all set. Bike load करके I invited Ashwini and Pranav for breakfast at this cute joint recommended by Mr. CD Singh. One of the cutest चाय का शॉप I've seen. बहुत ज़्यादा क्यूट है जगह ये। All done, and we are ready to leave. I'm saying bye to you on camera. The worst thing about meeting people on trips is saying goodbye. I mean, mixed emotions hota hai. You are happy you're moving to a new location, new destination, but at the same time you feel kind of sad that you're leaving the person. Hota hai, kabhi kabhi hota hai, kabhi kabhi nahi hota hai, but most often it happens. I met this amazing lady, Ashwini, a really nice person, and she actually made my trip worthwhile, because काजीरंगा में बहुत डाउट था मुझे, एंड मुझे यहाँ पर आने का, should I come, should I not come. It was so nice, such a lovely experience. They came on the safari with me, and it was amazing, just amazing, and we spent a lot of time together. Feel sad, I wish I could spend more time and all that, but I have to head back. I need to finish this trip once and for all. So फिलहाल अभी मैं दिल पे पत्थर रख के I am leaving, and hopefully I will see them soon someday. And अभी चलते हैं गुवाहाटी, guys. It's time to head back. अश्विनी के साथ टी एस्टेट एक्सप्लोर करते वक्त I did think about staying back another day, and I wish I had, क्योंकि आगे जाकर जो मेरे साथ होने वाला था वो एक ऐसा भयंकर चीज़ था जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था।